Hello everyone. In this video we will be solving a problem which is Subarrays with k different integers, lead code 992 problem. See, it's a hard level problem and very good problem of sliding window, or we can say two pointers. So before going forward in this video, please make sure that you have liked and subscribed to this channel. And also it's my advice to all of you that please read the problem and try to build up the integers. Then try to do the code. And if you stuck at any point, then you can see this video and it will be beneficial for you. So otherwise, simply see this video and then do the code. It will not be beneficial for you. So let's see the problem statement. Problem says that we given an integer array nums and an integer k. Return the number of good subarrays of nums. A good array is an array where the number of different integers in that array is exactly k. So we have given k as an integer. So we have to return a subarray which has exactly k different integers. So for example, 1, 2, 3, 1, 2 has three different integers 1, 2, 3. A subarray is contiguous part of the array. Okay, this is the definition of subarray. Like subarray is a contiguous part of the subarray of array. So if we take an example, nums equals to 1 to 1, 3, 1 to 3 and k equals to 2. K equals to 2 is showing like whatever subarray I am making, whatever subarray I am creating, in that subarray, the number of distinct elements should be exactly k. You can see here the subarray is like 1, 2. The number of distinct element is 2. Also, the number of distinct element is 2 in this subarray. In this subarray is also 2. In this also 2. In this subarray 1, 1, 2. The number of distinct elements is also 2. And this. So the total number of subarrays can be 7. If we take example of this subarray and k equals to 3, so how many subarrays we can create so that number of distinct element in each subarray is exactly k. So 1, 2, 1, 3, number of distinct element is 1, 2, 3. So it can be a subarray, and this also can be a subarray, and this also can be a subarray. So that's why we are returning 3 as an answer. So let's see the approach for this. So approach part is very simple. You can see here we are traversing the subarray and we are traversing the array and we are finding out the each subarray. So the brute force solution can be like we can create a whole subarray. Like what? How many subarrays we can create in this? Like what? I don't know how many subarrays, but जितने भी सवेरे we can create. Okay. So 1, 2, 1, 3, 4. सो इसमें सारे सवेरे मैं क्रिएट करूंगा एंड देन एक ट्रेवर्स लगा के चेक कर लूंगा कि यार ठीक है इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है. सो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कैन बी लाइक 4 इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन एन. इफ आई एम एट द 1, मैं एक 1 को पकड़ रहा हूँ तो 1 से कितने सवेरे क्रिएट कर सकता हूँ. 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 4. Then these savages I can create from 1. Then I will go forward and I will take 2. Now 2 2 1 2 3 2 4. These savages I can create. So like this I can create all the savages. Now I'll check like my condition is valid or not in that particular savage. Like I 4 int I equals to 0 to I less than n. I'll create a loop and I will create a map also. Then another for loop will go from j equals to I to n. Now I'll check like map of nums of j plus plus. जो end वाला point है उसके मैप काउंट मैप को बढ़ा देंगे, मीन्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे. हर एक एलिमेंट को बोल देंगे उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे. ठीक है. नाउ आई विल चेक लाइक इफ मैप डॉट साइज इक्वल्स टू k. इन दैट केस मीन्स total number of distinct element equals to k. In that case, I will increase our count. And else if condition if map dot size is greater than k, because I have to found the total distinct number of elements should be equal to k. But if map dot size is showing the distinct number of elements, if it is greater than k, in that case I will break. And finally, I will return our count. So the time complexity for this solution is I am using two for loop, and somehow I will check like it is equals to k or not. So it is nearly about big of n square log n, because of this map, and nearly equals to big of n square. And space complexity is big of n because somehow we are storing our elements into the map. So this is the time in the space complexity, but this is not the acceptable time complexity, because you will see like the constraint we have given is nums dot length equals to 2 into 10 to the power 4. If we do big of n square, then it will be 4 into 10 to the power 8. That is not acceptable. So but
and now in this solution I have to find like how I can decrease or reduce this time complexity or space complexity. So let's see the good approach for this optimal approach we can say. So optimal approach is sliding window or two pointer approach. Like what I will do is I will take two pointer, start end, and initially both pointers will point to the same index which is 0. Now I will increase the and I will take a map also. Map is showing like 1 2 3 4. Map is showing how many times this number is occurring. Like you can see, I will tell you about this, and I will take up the वेरिएबल लाइक डिफरेंट मीन्स कितने डिफरेंट एलिमेंट अभी तक मेरे सब एरे में आ चुके हैं, ठीक है. एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेक लाइक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज लेस देन इक्वल टू के माइनस नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज लेस देन इक्वल टू के माइनस वन. बिकॉज क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, लाइक if start and end pointer is showing on this zeroth index. now इसको बढ़ाएंगे. now count of वन is कितना हो गया, वन की फ्रीक्वेंसी अभी तक कितनी होगी, वन हो गई, ठीक है. इस एंड वाले को आगे बढ़ाएंगे. अब टू की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, वन हो गई. फिर एंड वाले को आगे बढ़ाएंगे, टू की फ्रीक्वेंसी क्या, इसमें डिफरेंट को भी बढ़ाते जाएंगे. डिफरेंट इनिशियली जीरो है, फिर वन है, मीन्स यहाँ पे तो जीरो था, यहाँ पे वन हो गया, वन लिया तो वन हो गया. फिर यहाँ पे टू पे आया तो डिफरेंट टू हो गया, ठीक है. Now again, but k equals to 3 in this solution, you can see we are taking k equals to 3. So we need three distinct element in my sub array. So अभी तक कितना हुआ, दो एलिमेंट हो गए. इस एंड को आगे बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वन की टू होगी. फिर एंड को आगे बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टू की टू होगी. नाउ अभी तक मेरे पास दो डिफरेंट एलिमेंट आए हैं, वन और टू, ठीक है. तो ये मैंने लिखा नहीं है, वन वन को काट के टू भी हो गया अभी, ठीक है. फिर मैं थ्री पर जाऊंगा, थ्री पर जाऊंगा तो मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट कितने आ गए, थ्री आ गए. that is how I need what I need that is मेरे को क्योंकि तीन ही डिफरेंट एलिमेंट चाहिए, ओके इसका जो थ्री है तो थ्री की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा. नाउ आई विल चेक लाइक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के माइनस नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के माइनस वन. दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इक्वल टू के बिकॉज के माइनस वन will give me 1 which is equals to k, exactly equals to k. So let's see the code for this. Coding part is very simple. You can you know that this subarray type of question is coming regularly in problem of the day. So many times I have told you about this. So what we will do in this problem is we will return a function like count subarrays. In subarray I will pass nums comma k comma k minus 1. I have told you about this k minus 1 will give me the exactly equals to k वाला एलिमेंट, ठीक है. Now what I will do, I will create a function count subarray. Now I will check if k equals to 0. In that case, if my k equals to 0 means number of distinct elements should be equal to 0. That is not a possible task. That is not possible. So in that case, I will return 0 simply. Okay. And I will initialize like int n equals to num dot size in total number of counts, like how many subarrays I have created till now. And int distinct equals to 0 means how many distinct elements I have created. Like I have told you about this different elements, like different this variable. So how many different elements are here in this subarray till now. And int start equals to 0, and I am creating a vector of count which is 20,000. Sorry, yeah, 20,002. And you can see here nums dot length is 20,000. So that's why I have created this, just increasing the ing pointer, so 20,002. Now I'll create a loop for end equals to 0 to end less than end plus plus. Now I'm checking the condition count of nums of end equals to 0. Simply I will create this means nums of end का count means frequency of that particular element is initially 0. So I will distinct plus plus and I will increase the frequency also like this. इनिशियली इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वन की फ्रीक्वेंसी जीरो थी. तो मैंने अब कितना कर दिया, वन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया और डिस्टिंक्ट एलिमेंट को इंक्रीज किया. सो दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी डिस्टिंक्ट एलिमेंट को इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर दिया. एंड एल्स केस में भी फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करूंगा बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट को इंक्रीज नहीं करूंगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, जीरो नहीं होगी स्टार्टिंग. अगर स्टार्टिंग में जीरो है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि वो मतलब एलिमेंट मेरे पास नया नया आया है, ठीक है. इस लाइन का मतलब है कि वो एलिमेंट मेरे पास
उस मैप में पहले से पड़ा हुआ है, बस हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई विल चेक द कंडीशन इफ डिस्टिंक्ट इज लेस देन इक्वल टू के। सो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने होंगे, टोटल प्लस इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन, दैट विल गिव मी द लेंथ ऑफ these two pointers, length between these two pointers, like start and end pointer. In else case, what I'll do, I'll simply create a while loop, and I will check like start should be less than n, start should be less than equals to n. This is the basic condition for sliding window technique, and is this is a condition if distinct is greater than k, if distinct number is greater than k, in that condition मेरे को distinct वाले, अगर distinct number of elements, like number of elements are distinct like 3 and we need k equals to 2, so in that condition what I will do, I will simply decrease the frequency of that particular nums of start, decrease, I will decrease this, and I will check a condition if count of nums of start equals to 0. If count of nums of start equals to 0, in that case I will decrease the distinct number of elements and I will increase the start pointer, and finally I will update my total plus equals to end my start plus 1, and finally I will return the total. So now let's submit this, run this and submit it. Yeah, it is working perfect. Let's submit this code. You can see here it is working perfect. It is better than the 99.82% of C++ users. Why it is working perfect? Means why it is better than the other user? Because here, see, we are using only one loop for this loop. मोटा मोटा वन लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बाई लूप भी यूज कर रहे हैं, तो उसको काउंट नहीं करते अपन, ठीक है। वो बस एक कंडीशन चेक करने के लिए बाई लूप, वो रन नहीं कर, ट्रेवर्स नहीं कर रहे उस बाई लूप से, बस कंडीशन चेक कर रहे हैं। सो दिस वाज द कोड। सो इन दिस कोड सिंपली आई व्हाट आई हैव डन इज, बट मैं क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल स्लाइडिंग विंडो की जो बेसिक टेक्निक है उसी को यूज कर रहा हूँ। पिछली 4-5 बार से आपने देखा होगा, 4-5 बार से पिछले प्रॉब्लम ऑफ द डे में भी हम स्लाइडिंग विंडो का यूज कर रहे थे और सेम टेक्निक यूज कर रहे थे, तो मैंने सेम ही कोड यूज किया है, जस्ट आई कॉपीड पेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड। बस एक दो कंडीशन चेक, मतलब चेंज करी है मैंने, ये वाली कंडीशन चेंज की थी, और ये सेम था पूरा, ये भी सेम था, बस एक इफ वाली कंडीशन चेंज करी है बस। सो all things are same, but some things are like this condition you can see and this previous condition I have changed. I've done nothing in this problem. So this was the code. If you find this helpful, then please like, share, subscribe. तब तक के लिए bye.